बोली तुझसे मैं तो कितनी कितनी बार, कुछ दिन छुटे अभी मिलते हैं नया। बोली तुझसे मैं तो कितनी कितनी बार, लोग बाग पूछते हैं खामखा सवाल, छेड़ते हैं तेरे नाम से। नाम तेरा जो मुझसे जुड़ गया, लो शहर भर को किस्सा मिल गया, उनके तानों का करियो ना ख्याल, इश्क ही क्या जो होना कुछ बवाल. Congratulations, Amit Trivedi, Asees Kaur, and Abhijeet Srivastava. That was, of course, your new song titled Boli Tujhse, which is written by Raj Shekhar. We can really feel the emotions which is beautifully expressed in this song. So, to start with, how it all started and which force brought you all together? The force is called Viral Records. Yeah. So they wanted to do this song. Viral Records had approached me and they wanted to do a love song. I had this love song with me. I created this love song as per their brief. They had a beautiful thought in their head. I played them. They liked it. We went to Raj Shekhar sir. Raj Shekhar gave his spin on it. And what a beautiful spin he gave on it. He came back because he had that time Omicron was at its peak and he had COVID. I remember Raj Bhai had COVID and he was really struggling. It was really bad for him. तो वो थोड़ा सा वो रिकवर करते करते घर में अकेले थे तो उन्होंने साराना आई थिंक लिखा था ये गाना और बहुत खूबसूरत से लिखा उन्होंने ये गाना आया. We all loved it and Asees came to the studio while I was not there. She was here. Abhijeet was in Lucknow. I sent it to him. He recorded from Lucknow. Asees recorded alone in the studio. I was in some other place. Raj Bhai was in some other place. So 4 अलग-अलग दिशाओं में लोगों ने मिलके गाना बनाया. To then, do you guys miss the feeling that you get while recording in the studio? Is it a different feeling when you record a song and make a song remotely? Yeah. अभी तो खैर obviously ideally that's how it should be. In an ideal scenario, musicians should get together and jam and then ideally that should be. But with the given क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी दैट वी आर लिविंग इन एक उसका फायदा उठा रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी का बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी का इतना फायदा है कि कोई भी कहीं भी रह के कहीं से भी कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता है. वी कैन सिट हियर आई कैन सिट हियर एंड मेक अ फुल एल्बम alone in this room. That's the beauty of it, the beauty of technology. But having said that, yes, nothing to beat the energy of having people around you. It is always much more fun and a learning experience जब हम सर के सामने गाते हैं because तब बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं like वो आमने सामने अगर हमने कुछ किसी और अंदाज में गाया तो we can say कि ये मुझे ऐसा अच्छा लगेगा. So it is definitely a better thing to sing in front of him. But अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो then also we made sure कि like I made sure that he is happy with how I've sung the song. हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद सर को साथ के साथ ही हमने भेजा कि सर आप सुनो. He had some changes. फिर उन्होंने वापस मुझे कॉल पर समझाया कि ये ऐसे करना है. तो आई थिंक साथ होते तो और मजा आता. बट गाना तो देखो हमने बहुत अच्छा बनाया दूर दूर रहकर. Abhijeet, whom you were imagining while singing this song? Good question. अभिजीत पकड़े गए. सर ऐसा कुछ नहीं है. I mean I was not imagining anyone, but of course जो lyrics थे and जो composition थी उसको सुन के ही ऐसा जो feel आ रहा था वो बहुत pure था. So मुझे सर के साथ जब भी रिकॉर्ड करता हूँ whether being in a studio या फिर अगर वो कुछ भेजते भी हैं जैसे I was in लखनऊ तो वहाँ से किया था. So वो मेलोडी में ही इतना सुकून और मजा आ जाता है अगर वो कोई लव सॉन्ग है या जैसा भी है. So वो आपको ना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. वो गाने की धुन और ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है मुझे ऐसा लगता है. और ऑफ कोर्स जब आप स्टूडियो में होते हो सर के साथ तो बहुत सारी जैसे आशीष ने बोला कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हो वहाँ पे एंड कि ये गाने में बेटर लगेगी या ये बेटर लगेगा. सो वो सारी चीजें थोड़ा हम मिस आउट कर जाते होंगे शायद.
So I just recorded and sent it to him and उनको पसंद आया. So वैसे था. पर हो सकता है कि स्टूडियो में we could have done something different. ये नहीं अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ अलग भी कर सकते थे भाई, अगर ये दोनों साथ होते, मैं भी वही होता. So yeah, वो एक एक्सपीरियंस है जो अभी हमें इस गाने के लिए नहीं मिला. The song is very refreshing, and how you brought the newness in your voice while singing the song. Was there something you have done new, maybe an accent, or you styled your voice differently for this song, Abhijeet and Asees? For me, I just felt कि लिरिक्स सुन के एंड मेलोडी जैसा आता है आफ्टर द फीमेल पार्ट, आई जस्ट फेल्ट कि उसमें एक बहुत खुलापन होना चाहिए. एंड वो क्योंकि जैसा लड़का वो खुला बोल रहा है कि हाँ कोई सीन नहीं है, बवाल हो रहा है तो हो जाने दो, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि कोई भी ऐसा सॉफ्ट टोन या जैसा हस्कियर टोन या ऐसा कुछ एरी टोन मैंने नहीं यूज करने की कोशिश करी. आई जस्ट वेंट फुल आउट, जितना मेरा आवाज मैं बोल सकता हूँ क्लियरली, बिना किसी हवा या बिना किसी एयर जो हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूलेशंस वगैरह, उसके बिना आई जस्ट went full on with my voice. So वो मेरा approach था, because that's what the lyrics were trying to say. Very very rightly said. I think composition और lyrics आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आपको कैसे टेक्सचर में गाना है, और इसकी वजह से कभी कभी ना गलती भी हो जाती है कि हम किसी और टेक्सचर में गा के आ जाते हैं, और जब फिर गाना रिलीज होता है तो किसी और की आवाज में रिलीज होता है, तो तब मुझे लगता है कि यार ओह शिट, ये टेक्सचर तो मैं भी गा सकती थी, मुझे अगर बताया जाता. तो ये भी होता है. बट आई थिंक फॉर दिस सॉन्ग मुझे आपके अलावा भी, इससे पहले भी 2-4 लोगों ने कहा कि आप अलग साउंड कर रही हैं. इवन राजशेखर कॉल्ड मी आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग कि मैंने पहचानी नहीं तुम्हारी आवाज है. मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो अपने तरीके में ही गाया है. बट आई थिंक दैट टोन वाज अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज लिरिक्स में वो बहुत सहमी हुई है, और मतलब वो डरी हुई है कि यार मत बताओ ना यार, रहने देते, नहीं कि ऐसी बातें होंगी हमारे बारे में. आई थिंक दैट वाज द picture in my head, और उसके हिसाब से the tone was a little softer, airy and like sweet. You know, I double checked. I'm not kidding. I swear, I double checked. I googled and said, "Oh, it's Asees," because I haven't like heard you singing like this, Asees. That's why I asked this question. I think that's the beauty of Sir's composition. So you get to try different textures and different experiences. So that credit goes to him. Then Amit, please tell us about the composition process for a single compared to say a film song. Since I've been doing films since 15 years, I am always driven by situations. I don't know, it's become a habit, I guess, of some sort. It's the conditioning. So I need to know in advance where am I going, because गाना तो बैठ के कुछ भी बना सकते हैं, बट क्या कहना चाह रहा है गाना, किस दिशा में जा रहा है, क्या डायरेक्शन है. There are various things, whether it's emotion wise, there are various ways to emote love, and whereas genre wise, we have so many genres we can do. Love can be done in funk also, it can be done in R&B also, it can be done in desi, it can be done in EDM also, so many ways. So वो डायरेक्शन पहले तो पकड़ना होता है कि कहाँ जाना है भाई हमें. तो वो खैर always it comes from the directors, the producers or the makers who are एक विजन लेके चलते हैं, लोग एक डायरेक्शन ले होता है. कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी होता है. जब होता है, as far as this song is concerned, थोड़ा खुला कैनवस था, Okay, थोड़ा था, but love was the emotion, yes. But then again, मैं सोचा कि love तो बहुत तरीके से किया जा सकता है. I thought थोड़ा देसी अंदाज में, simple melody और देसी अंदाज में करे तो better रहेगा, rather than dwelling into different styles and genres, जो मुझे मजा आता है करने में, अलग-अलग जो करते ही आए हैं हम लोग बरसों से. इसको बेसिक और सिंपल रखा. And sometimes you realize when you keep things very basic and simple, it just works. Yeah. you know, Amit, you of course have collaborated with Abhijeet Srivastava for Haseen Dilruba and with Asees for Graham and Kedarnath. Do you keep a sort of bank of special songs and good song reserved for Asees and for Abhijeet, whom you actually gave him with first film Andhadhun? ऐसा हो गया ना तो पता है, मुझे अपने करियर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मेरे को हर साल एक गाना में मिलेगा सर का, तो मैं चलता रहेगा करियर, मस्त स्ट्रेस. अरे नहीं, मतलब मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा था, मुझे टेक्सचर से बड़ा लगाव है, बहुत प्यार है, हम सबको है. The tonality, what I'm trying to say is the sound of the voice.
It's the sound of the singer. It's all sound driven. How is the sound sounding? So Abhijeet ka sound bada acha hai. I do not treat people as singers. I don't categorize singers. Singers नहीं बोलता मैं किसी को भी. सब अलग अलग सिंगर्स है, अलग अलग तरीका है. बहुत से खूबसूरत सिंगर और टॉप सिंगर्स है, और बहुत से ऐसे सिंगर्स है, बहुत से सिंगर्स है जिनको गाना बिल्कुल नहीं आता, और उनको मतलब माइक के सामने खड़ा कर दो आपको स्ट्रेस हो जाएगा. but उनका टोनालिटी, but the sound of their voice, just gift of the God. The sound of the voice is so beautiful that I have recorded many such singers in my life who are really not that good, really not that ace or trained, but the tonality and texture attracts me so much that मैं उनको गवा लेता हूँ, मैं करा लेता हूँ, भाई आ जाओ, I need this sound in my song. So I see them as a sound. Sorry to say that, but I see always singers. वो कैटेगरी में आते हैं क्या? I always see singers as that. वही सर, हम लोग को आता नहीं है, पर साउंड की वजह से चल जाता है. साउंड नहीं, अब आते हैं इन लोगों पे. ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो कंप्लीट कैटेगरी के लोग होते हैं. जैसे कि मैं कहता हूँ जो श्रेया जिसमें फॉल करती है, अरिजीत जिसमें फॉल करता है, सुनिधि जिसमें, लता जी की साउंड भी है, टेक्सचर भी है, सिंगिंग भी है, गायकी भी है, इमोशन भी है. मतलब वो बहुत सारे टिक बॉक्सेस होते हैं टू एक्चुअली डू अ प्लेबैक. और प्लेबैक का मतलब ये होता है कि इट हैज टू हैव अ इनहेरेंटली, प्लेबैक का कॉन्सेप्ट ही है कि इट हैज टू हैव अ heroic voice, a voice which suits hero and heroine of that era. अब जब माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला थी, तब उस एरा में obviously अलका जी और कविता जी, and they did a great job. But now since we have Bhumi Pednekars and Kriti Sanans, you need a younger generation to do that thing, and you need that hero or Tiger Shroff or Ranveer Singh or whoever. You need that heroic voice. Playback is always bracketed into that heroism wala voice. But very few people have that. Singers are dime a dozen, but then who ticks all these boxes are very few. So when the boxes are ticked, मैं उन लोगों को मैं खास करके ज्यादा करके उठा के पटकता हूँ स्टूडियो में. आओ इस साल का एक गाना, बस एक गाना दिया करो आप हमें, हमारा चल जाएगा. हर बार के हीरोइज्म देंगे. You know, you all are rock stars who are either creating music or touring across the world doing concerts. So what is the most non-glamorous part of making process? The things that no one talks about. I think मुझे कुछ भी non-glamorous नहीं लगता. I thoroughly enjoy the process, especially जब हम सेट पर काम भी कर रहे होते हैं. किसी को नहीं पता होता हम कितनी मेहनत करते हैं कि क्या साउंड होगा, क्योंकि गाने हम अपने हिसाब से रीअरेंज करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेट एंड आवर ऑडियंसेस प्रेफरेंसेस. तो आई थिंक वो चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट दैट इज आल्सो वेरी फन. मेरे लिए म्यूजिक मतलब कुछ ऐसा है कि इबादत वाला सीन है. करो तो दिल से करो, अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, छेड़ो मत, ऐसा वाला सीन. बहुत सही सीन. ये ऐसे होना चाहिए, छेड़ो मत. बहुत लोग छेड़ रहे. You know, today we are living in a digital age. Do you think an artist can afford to ignore social media? And how do you think that social media has contributed to your success? You really can't ignore social media right now, because I think the era is of the era is already digitalized. और आप चाहो ना चाहो आपको ultimately करना ही पड़ता है. But I always find good things, and I think I can interact with my own fans individually, and मुझे एकदम एग्जैक्ट क्या कहते हैं फीडबैक मिलता है जब भी मेरा कोई नया गाना आता है, because people tell me कि ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा है. So I think सोशल मीडिया अगर अच्छे से यूज करो, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से, तो इट्स गुड. अदरवाइज आप सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे और रियाज नहीं करोगे तो फिर देयर इज नो फन. सी मैं तो था ही नहीं, कोई सोशल मीडिया में था नहीं. मैं अभी व्हाट्सएप पे भी नहीं हूँ. बहुत टाइम तक मैं इस चीज से दूर था. बट मुझे प्रेशर्स आए थे लोगों के, आसपास के लोग बोलते अरे you have to you know be seen, you have to be seen, people know your music but people don't know your face. So मैं बोला that's fine, because my business is for ears, not for eyes. I'm not an actor, so I'm doing the job of ears. अब लोगों ने सुन लिया, अच्छी बात है ना, अब क्या करेंगे जान के. But no, people want to know you, people want to see you. तो वो pressures थी which actually the time and era that you were talking about, कि वो they kind of force you to be in that platform कि भाई अच्छा ये
ऐसा ही होता है आज की ये दुनिया में, आज की तारीख में ऐसा ही होता है. तो you have to mold yourself to it, adjust yourself to it. I did that. I am working myself towards this new digitization era. जब पिछले आया भी 5-6 साल में, इतना बड़ा बूम भी अभी भी हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से था पहले, पर अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, लार्जर देन लाइफ हो गया, कंज्यूम कर लिया, सबकी जिंदगी को कंज्यूम कर लिया इसने. सोशल मीडिया आई थिंक इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट. आजकल तो सब कुछ ही उस पे बेस्ड है. योर सॉन्ग हाउ डज इट डू, एंड आपका बेसिक हर रोज का पोस्ट होना जरूरी है, वो सारी चीजें हैं. बट आई एम डेफिनेटली मोर अट्रैक्टेड टू द प्रोसेस. मैंने एक चीज देखा है, आपका बिजनेस भी जनरेट होता है आपके फॉलोअर्स के काउंट के हिसाब से. बहुत ब्रांड्स आते हैं, ये सब मैंने सुना है. हाँ, तो इट्स बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट्स अ अर्निंग टूल नाउ. इफ यू हैव मोर ऑफ द फॉलोअर्स, मोर रिचर यू आर, बिकॉज दैट मेनी एंडोर्समेंट्स यू गेट. मतलब मैंने खुद देखा है लोगों करते हुए कि अरे इसके फॉलोअर्स कम है, इसको नहीं लेते, इसको नहीं बुलाते गाने, इसको नहीं बुलाते एक्टिंग करने. ऑफ कोर्स मेरे साथ हुआ है सर. मेरे फॉलोअर्स उसमें बहुत कम थे, मुझे मेरी बजाय किसी और को दिया गया था गाना क्योंकि उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे जी. और आजकल मुझको भी कहा जाता है कि ये सिंगर को, ये फलाना सिंगर को कास्ट करो, एक्टर को कास्ट करो, बिकॉज इनके फॉलोअर्स ज्यादा है. तो अभी जब बिजनेस ही पूरा रन कर रहा है इस पे, आपका ये आपके पेट पे, आपके घर पर आ गई ये बात, घर चलाने पे आ गई ये बात, तो देन यू हैव टू succumb to it. Yeah, sure. And finally, Amit, April 30th is World Jazz Day. You actually composed the soundtrack of Bombay Velvet. That had the full jazz music, and jazz music was the character in that film. You said that album has always been very special for you. You know, I love 2 tracks in that album. The first one is Sylvia, and other is Behrupia. Even Dharam Dharam, I was listening to last night. So what was your most enduring memory of creating music for Bombay Velvet? And what was it that you discovered about jazz music? the whole album, working on the entire film, not only the songs, even the score of the film, I think it was one of the most enduring, most beautiful processes and moments that I've had. I can't even explain. इतना मजा आया. First of all, I'm not a jazz musician. मेरे को jazz आता नहीं था, but obviously मैंने सुना था. Now I like these challenges. As I told, I like these situations. I like director, the producer telling me you have to go to this world, but that really excites me. Maybe मेरी फट रही है अंदर से, ये गली में जाऊं कैसे, मुझे तो जब पता ही नहीं रास्ता उसका, पर जाते देखते देखा जाएगा क्या होता है, तो मैं चल पड़ता हूँ. अब मुझे जैज का कोई आइडिया नहीं, आई एम नॉट very well versed with it. I had to learn, I had to do workshops, I had to learn jazz, I had to understand a lot about it. And we were dealing with standard jazz. I'm talking about 50s, 60s. उस दौर का. It's not even the modern jazz we are talking about. We're dealing with that one. अब मेरा बाप रे, ये तो 60 साल पीछे जाना है और एरा में जाना है. उस एरा को और ज्यादा चैलेंजिंग, मेरा बाप, और भी डेंजरस गली. और मजा आएगा, देखते क्या होता है. तो उस वक्त जो भी है, नीना सिमोन हुए, एला फिट्जगेराल्ड, फ्रैंक सिनात्रा, बहुत सारे ऐसे जैज आर्टिस्ट है. उनको सुनना, उनको सीखना, उनको समझना, लोगों से मिलना, थोड़ा पढ़ना, वर्कशॉप्स करना, और अब एक नई दुनिया सीखने मिली थी. और फिर जब मैं प्राग गया था, we were supposed to go to New Orleans. New Orleans is supposed to be the hub of jazz in the world, and where you kind of get all the best of the musicians, jazz musicians. They're like, you get situated. For some reason, मेरा US visa में कुछ problem हो गया. So the next best place was to go to Europe, and that was Prague. And Prague is another such mecca of musicians, like you can say mecca of crazy, fantastic musicians. So dealing with these likes of people, musicians who on a daily basis, either they are playing with Hans Zimmer or John Williams or these, or they are coming for your session, recording for you, and there was some hundreds of them. So talking to them, oh my God, I can't even tell you that those 10 days in Prague, the best 10 days that I have spent doing this album. And then, of course, when coming back to Bombay, we had Neeti Mohan, who had done a very vigorous training process, because we had to put her into that process. And then Anushka Sharma also, she had to be in the studio because she was playing the jazz singer in the film as Rosie. Neeti was the voice. So that having Anushka and Neeti to be in, locked together in terms of how it's going on. So those beautiful sessions. Anurag Kashyap, of course, being the crazy
creative person. Amitabh Bhattacharya. Wow. Wow, what a songwriting process he has had in this album. This is by far one of my most favorite albums. The process that I've enjoyed the most, that was just Abhijeet talking about. I don't care at the end of the day nahi chala, nahi samajh mein aaya, because ultimately jazz की audience पूरे world में एक या 2% है. और हम बात करें इंडिया की, यहाँ तो चांस ही नहीं. तो मैं मतलब भले ही चले, अभी हुआ था डिप्रेशन, हुआ था, तकलीफ हुई थी कि बिल्कुल कुछ नहीं चला, पर मजा जो आया ना, वो जो पीस. It's a fact. I'm sorry I'm late to the party. I love Bhairupiya. I was listening to it, and Dharam Dharam. It's an amazing song. I may be the minority, but I really enjoyed that album. And that's I'm happy. I have like many such minority people come and told me how crazy they are behind this album, and that's like enough. Because first of all, for me, it's a big deal to do jazz music, and I've done it, and I've gotten approval from the like right people who understand jazz, right from the people who were in Prague. They were all either somebody from German, somebody from the different parts of Europe. The conductor himself was from UK, from London. So they were appreciating it and they were talking great things about it. अरे हो गया भाई, मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया है, मैंने अपना काम कर लिया, बाकी जो होगा वो तो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ में. Thank you so much and best of luck. Thank you so much. Thank you. Thank you.